I told my parents. Initially, when we started the organization, Islamic Research Foundation, I told my parents I will only be giving 2 hours a week. Because once I finish my internship, when I joined... हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं 2 गोल्डन एडवाइसेस ऑफ डॉक्टर इसरार अहमद टू डॉक्टर जाकिर नाइक। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। अभी तक इनकी हमने एक ही वीडियो देखी अपने चैनल पे और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और डॉक्टर इसरार अहमद की तो हमने अभी कल ही देखी है और उनकी वीडियो इतनी अच्छी थी, इतनी उन्होंने सुलझी हुई उसके अंदर बातें करी थी, वो वीडियो भी हमें बहुत पसंद आई थी। मतलब होप करते हैं कि हम आगे और वीडियोस उनकी देख पाए, उनके और बयान सुन पाए। तो पर पहले आज की वीडियो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो आज की वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, जिनके आई थिंक फैंस पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी जो बातें हैं उनमें इतनी सिंपलिसिटी है। ये आई थिंक इनकी बातों का सबसे प्लस पॉइंट है कि ये बहुत सिंपल इंसान है। और जब एक साधारण इंसान जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों के अंदर बहुत लॉजिक होता है। तो इनकी बातें हमेशा ही हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं और पता करते हैं कि आज की इस वीडियो में ये क्या खास बता रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। of the second speaker or second personality who had a great impact on my life, and that was Dr. Israr Ahmed. वाओ, Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. So I traveled all the way to Pakistan in 1991 to meet Dr. Israr Ahmed. He was a medical doctor. He wasn't trained in any Wow. Islamic institute or Islamic university. He was a medical doctor inspired by Maududi, Jamaat Islami, went to Tabligh Jamaat, they started their own organization, Tanzimul Islam. I went to Lahore to meet him क्या बात है। and I was shocked at his simplicity. The command that he has over the Quran. He also speaks in English but mainly in Urdu. And I was impressed by it. So I purchased all his video cassettes and added to the video cassette library. And to cut the story short, I learned many things from him. I'll just mention 2 important things I learned. Number 1, he told me that I told about my background. I'm a medical doctor. I've just passed. And in 1991, I finished my medical studies and I was doing my internship when we started the organization. In 1991, in 1990, I finished my medical studies. For 1 year, there was internship. And during internship, I had more time, so we started the organization. So I told him, I've just finished my medical studies. I would like to become a surgeon, do my MS, and I'm interested in dawah. So he told me, son, you have to choose between the 2. Either you choose your medical practice or dawah. I, being a medical doctor, I practiced for 7 years and tried to do both. I could not. If you want to specialize, choose between the 2 one thing. Then, after his guidance, I chose to become a Dai. The second thing I learned from him was, he told me that if you want to become a Dai, see to it that you make your personal needs the minimum. I said, क्या बात है। he said, if you make your personal need the minimum with the least amount of monthly requirement, you can speak the truth more easily. You won't have to depend on anyone. सही बात है। You won't have to depend or please someone who's paying your salary. See to it that your needs are the least. And I saw that he had such a big institution, but what a simple man Dr. Israr Ahmed. May Allah grant him Jannah. And this thing, that not to spend excessively, was one of the cornerstone of my success. Just in case I forget, toward then I may tell you, but today
I require only 2,000 ringgit a month for me and my wife to survive. Only 2,000 ringgit. Very comfortably. Very comfortably. Not for my dawah activity. Dawah activity, though I have travel, fly, I pay my own money, that's different. That may be large amount, but for my personal needs, 2,000 ringgit is sufficient. In Bombay, it was 40,000 rupees. Here it is 2,000 ringgit, sufficient. Inshallah, time permits, I'll come to it later on. So these two things I learned from Sheikh Ahmed Deedat. And when I came back, I told my parents, initially when we started the organization, Islamic Research Foundation, I told my parents I will only be giving 2 hours a week. Because once I finish my internship, when I join the MS surgery, I have to be there 24/6 or 6.5. Maybe I get half a day in a week free. So I spend some time with my family and 2 hours in this organization. But then I decided I will not do my post-graduation. I told my parents, I want to give 2 hours a day for dawah and the balance time for my medical practice. My father had a roaring practice. My elder brother, Dr. Muhammad Naik, also was a doctor. क्या बात है. And my brother, he was a very good orator. So when Sheikh Ahmed Deedat came, he was the MC. Because he was the Secretary General of his medical college. Very good orator. Not an Islamic speaker, but a general orator. So that's how Sheikh Deedat was impressed. So I told my parents, 2 hours dawah, remaining medical practice. After a couple of months, I said 50% dawah, 50% medical practice. They said no problem. Then I said 2 hours medical practice, remaining dawah. They said no problem. Then after maybe a year or so, I said full-time dawah. They said no problem. No problem. बहुत बढ़िया. क्या बात है यार, कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी. मतलब इनकी वीडियो सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा था. एक तो पीछे इतना अच्छा, इतना लाइट म्यूजिक चल रहा था, ऊपर से वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे. साथ में उन्होंने जैसे बताया कि उस टाइम पे वो 40,000 कमा रहे थे और उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद की एडवाइस से उन्होंने सिर्फ अपने महीने का खर्चा 2,000 रुपये किया. बहुत बड़ी बात है यार ये. मतलब किसी की एडवाइस लेना और उस एडवाइस पे चलना. एडवाइस तो हम सबकी ले लेते हैं, मतलब आजकल एडवाइस देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, बट हम लोग कितनी एडवाइस पे चलते हैं ये हम ही जानते हैं. तो पर इन्होंने उस एडवाइस को फॉलो किया और आज वो सक्सेसफुल हैं, ये हम सबको पता है. तो मतलब मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी. बहुत इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने इसके बीच में बताई. तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी थी. वाकई में अगर जहाँ बातें सुनी जाए डॉक्टर जाकिर जी की, तो ये कितनी सिंपल बातें हमें बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनने वाला था. डॉक्टर की लगभग इन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ी. उसके बाद ये पूरी तरीके से इस्लामिक प्रचार में आ गए और धीरे धीरे कैसे इन्होंने टाइम जो है जहाँ पर ये 2 घंटे इस्लामिक प्रचार को और बाकी अपने मेडिकल प्रैक्टिस को देते थे, धीरे धीरे इन्होंने 50% से लेकर पूरी तरीके से अपनी लाइफ टाइम जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब इस्लामिक धर्म के लिए कर दी. तो ये वाकई में बातें बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है कि अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं और उस आइडल के लिए आप पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, अपनी पूरी लाइफ उनके लिए डेडिकेट कर देते हैं, तो ये वाकई में बहुत कमाल की बात है. और जाकिर जी जो हैं डॉक्टर जाकिर जी, उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वो अपने आइडल के लिए अपना सब कुछ जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो इनकी बातें सुनना हमेशा हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है. तो मैं इनकी वीडियोस के लिए तो हमेशा तैयार रहती हूँ और आज की वीडियो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. होप करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी. अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा और अपने थॉट्स जरूर शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में. और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय.